बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम यू ऑल इन द क्लास ऑफ एनिमल ब्रीडिंग इन जेनेटिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स प्रिंसिपल्स, डिफरेंट क्लासेस लाइक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, इसके अलावा कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और डिविएशंस फ्रॉम द मेंडल जेनेटिक्स। मेंडल जेनेटिक्स इज ऑलवेज नॉट वर्किंग, देयर आर सम डिविएशंस। सो आज हम इन पे डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले there are three famous laws of Mendel. The first law is law of dominance. These are the Mendel laws of inheritance. The first law is law of dominance. It shows that when two alternative forms of a gene, are the alleles. They are present in an organism. तो फिर क्या होगा? One allele express itself over the other. और वो एक जो खुद को एक्सप्रेस करता है दैट इज द डोमिनेंट, और दूसरा जो एक्सप्रेस नहीं होता, मास्क हो जाता है, वो रिसेसिव होता है। द डोमिनेंट allele masks the expression of the recessive allele in heterozygous individual. Remember, this happens in a heterozygous form, like Y for yellow, small y for green. If this is the case, the hybrid case, in heterozygous form, this capital Y and small y, the color will be yellow. So yellow is the dominant one, green is the recessive one. In the heterozygous form, the dominant form will reflect, will express, whereas the recessive form will remain masked. Then the second law of Mendel is law of segregation. Law of segregation states that each organism carries two alleles. Each organism carries two alleles for each trait, but these alleles separate during gamete formation, ensuring that only one allele is passed to each gamete. Every individual has two alleles for a specific trait, but when meiosis happens, each allele separates, ensuring that one allele is passed to each gamete. So, if this is the case, capital Y and small y, क्या होगा? कैपिटल Y एक allele है और दूसरा allele Y है, तो ये दोनों सेग्रीगेट हो जाते हैं। gamete फॉर्मेशन में दोनों allele सेग्रीगेट हो जाते हैं, एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. The inheritance of one trait is independent of another if the genes for the trait are located on different chromosomes. क्या मतलब है? Inheritance of one trait is independent of another. If we have two traits, one is shape, one is color, so shape is independent of the color. Shape अपनी रिफ्लेक्शन इसकी अपनी असॉर्टमेंट होगी और कलर की अपनी असॉर्टमेंट होगी, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये नहीं होगा कि रेड कलर आएगा तो उसके साथ ये वाला आएगा, ग्रीन आएगा तो उसके साथ ये, दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द माइटोसिस, ड्यूरिंग द meiosis, ड्यूरिंग द gamete formation. Leading, what is the advantage of this independent assortment? This leads to various combinations of offspring. हमें ऑफस्प्रिंग में डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलते हैं, उनका शेप, कलर, हाइट, साइज, वेट, मिल्क प्रोडक्शन, ये सारी चीजें, देयर इज वेरिएशन. ये वेरिएशन क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. फॉर सीड कलर इट इज कैपिटल Y, स्मॉल y, and for the shape it is R, round or rectangle. So they are inherited independently, which means this leads to various combination in offspring. ये आगे चलकर हम इसको इस Punnett diagram में रिप्रेजेंट करेंगे. Now we have two types of crosses, monohybrid crosses, dihybrid crosses, या इसके अलावा polyhybrid crosses भी हो सकते हैं. Just for simplicity, monohybrid cross जिसमें एक ट्रेट इन्वॉल्व होगा. ठीक है, monohybrid में एक ट्रेट इन्वॉल्व है. So for example,
कैपिटल T for tall and small t for dwarf. तो फिनोटाइप डायग्राम कैसे होगा? कैपिटल T and small t कॉम्बिनेशन में आएगा, जब हम इसको क्रॉस करेंगे कैपिटल T small t कैपिटल T and दोनों स्मॉल t. जीनोटाइपिक रेशियो क्या बनेगी? कैपिटल T होमोजाइगस फॉर्म, हेटेरोजाइगस फॉर्म एंड होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म. होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म 1, heterozygous form 2, 1, 2, and homozygous recessive form 1. So 1:2:1. ये रेशियो बनेगी हमारे पास जीनोटाइपिक रेशियो. फिनोटाइपिक रेशियो किस तरह होगी? टाल वर्सेस ड्वार्फ. हमारे पास 2 ट्रेट्स है, टाल एंड ड्वार्फ. तो टाल 3 और ड्वार्फ 1. होमोजाइगस फॉर्म में ये टाल होगा और हेटेरोजाइगस फॉर्म में ये टाल होगा. होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में ये स्मॉल होगा. ठीक है? क्यों? क्योंकि दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ मेंडल कि जब भी एलील होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में होंगे या हेटेरोजाइगस फॉर्म में होंगे तो सिर्फ हमारे पास डोमिनेंट जो एलील है वो खुद को शो करेगा, दूसरा जो है वो मास्क है. Then comes dihybrid cross, yellow round versus green wrinkle. Yellow capital Y round, capital R. Roundness dominant. Green small y and wrinkle small r. This is a recessive form. जब हम एक combination में different बनाएंगे यूनिट्स यूनिट डायग्राम में तो हमारे पास जो रेशियो बनेगी फिनोटाइपिक रेशियो वो होगी येलो राउंड, येलो wrinkle, green round, green wrinkle. तो येलो राउंड 9 phenotypic ratio, yellow wrinkle 3, green round 3 and green wrinkle only 1. ठीक है? This will be the phenotypic ratio. आप यहाँ से ये फाइंड आउट कर सकते हैं. Now we have incomplete dominance, which actually belongs to this area. So let's discuss it here. So these are the established laws of Mendel, which works in most of the time in genetics, but not always. There are some deviations as well. वो deviation क्या है? वो deviation सबसे पहले incomplete dominance. Incomplete dominance ये है कि neither allele is completely dominant. हमारे पास दो allele होते हैं तो दोनों में से कोई भी dominant नहीं होता, ना कोई recessive होता, बल्कि दोनों जो है वो अपने offspring में दोनों का जरूर होता है, दोनों की रिफ्लेक्शन होती है. इसकी मिसाल ये है फ्लावर कलर रेड कैपिटल आर, व्हाइट स्मॉल आर. दिस इज रिसेसिव. लेकिन जब हम इसको क्रॉस करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर तो हमारे पास जितनी भी ऑफस्प्रिंग है वो हाइब्रिड फॉर्म में आएंगे, बिकॉज़ दिस इज अ होमोजाइगस फॉर्म. और जो हेटेरोजाइगस फॉर्म में आएंगे तो सारे बच्चे ना रेड होंगे ना व्हाइट होंगे, बल्कि वो पिंक होंगे. द मिडिल ऑफ बोथ रेड एंड व्हाइट, द मिडिल इज द पिंक. तो सारे बच्चे पिंक होते हैं. ठीक है? सारी progeny offspring they are pink. It means neither of the allele is dominant and nor is recessive. Both allele are expressed halfway, 50-50. Then comes codominance. Codominance means both alleles are present simultaneously in a phenotype. एक phenotype में दोनों बैक पाए जाते हैं. Example is AB blood group. हमारी ब्लड ग्रुपिंग है A, B, AB and O. तो AB जो ब्लड ग्रुप है इसमें A भी मौजूद है और B भी मौजूद है, दोनों मौजूद है, दोनों की एक्सप्रेशन. So this is codominance. Then comes multiple allelism. A gene has more than 2 allelic forms. According to Mendel, there are only 2 forms of a gene. Either dominant or recessive. But this is deviation from Mendel genetics. This is true कि एक जीन के सिर्फ 2 फॉर्म्स नहीं होते, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं. And the example is human ABO blood group. इसमें A भी है, B भी है और O भी है. So in animals there are even more than 3 alleles of a gene. So इससे 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं. Then comes polygenic inheritance. This means the traits are controlled by multiple genes.
ये नहीं होता कि रेड जो है वो कैपिटल आ रहा है और ग्रीन जो है वो स्मॉल आ रहा है। हमेशा ऐसे डिस्टिंक्ट कलर्स आपके पास नहीं आएंगे। देयर आर अ वैरायटी ऑफ कलर्स, सो इट मींस कि traits are controlled by polygenic traits. These are controlled by many alleles, not only 2 alleles. And the example is human skin color, the height, the weight, the milk production. These are the polygenic traits. These are under the control of many genes. Then comes linkage and crossing over. Genes on the same chromosome tend to be inherited together. अगर वो same chromosome पे है, नजदीक है, तो they try to be inherited together. और crossing over ये है कि exchange of genetic material between homologous chromosomes during meiosis. एक chromosome है green, दूसरा red, ये दोनों जब crossing over होती है तो इसका कुछ ऐसा green का red में चला जाता है और red का कुछ ऐसा green में चला जाता है. This is crossing over. And this helps in different combination of the genes. So, phenotype में हमें different forms जो है, different variation of phenotype is reflected because of this crossing. Thank you.